गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुजतबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर चुके होंगे। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2020। नॉट एक्चुअली द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम फिल्मिंग। ये वीडियो मैंने सेम पहले भी एक दफ़ा फिल्म की एक्चुअल सिचुएशन में, बट उस टाइम में इतना रफ लग रहा था कि आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि मैं उसको जो है पोस्ट करूँ। सो मैंने कहा दोबारा से इसको जो है फिल्म करनी चाहिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वंस अगेन द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2020 फॉर यू गाइज। सो होप कि आपका न्यू ईयर जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा। 7 तारीख जो है वो हो चुकी है जनवरी की। 7 दिन जो है वो नए साल के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। एंड टुडे आई एम जस्ट फिल्मिंग दिस वीडियो। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती होंगी जहाँ आपको 2 मिनट के अंदर जो है वो तैयार होना होता हो और जहाँ आपको बस यू हैव नो टाइम एंड यू हैव टू लुक गुड एंड यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। 2 मिनट के अंदर जो है वो रेडी होकर निकलना हो। मेरे साथ ऐसे बहुत सिचुएशन होती है जहाँ पे कभी मैं सुबह देर से उठा और मुझे कहीं जाना है या फिर शाम को कहीं पे भी जाना है और मेरे पास स्पेशल इतना टाइम नहीं है कि जहाँ पे मैं तैयार होके फुल ऑन ग्लैम रूटीन करके जो मैं बाहर जाऊँ। एंड यूजुअली ये मेरे साथ होता है क्योंकि आई एम अ लेजी पर्सन और मेरे पास इतना आई डोंट वांट टू स्पेंड कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन ना हो जब मेरा दिल नहीं कर रहा हो कि मैं तैयार हूँ फुल ऑन, तो मैं यही चीज़ जो है वो करता हूँ। 2 मिनट के अंदर अपने आप को रेडी करता हूँ एंड आई एम गुड टू गो। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइज द रूटीन दैट आई फॉलो जब मुझे कहीं जल्दी जाना होता है। ये आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। बहुत सारे लड़के मुझे कमेंट करते हैं प्लीज़ अहमद भाई जो है वो लड़कों के लिए वीडियो बनाएं। सो दिस रूटीन यू कैन एक्चुअली फॉलो, लड़कियां भी और लड़के भी। जब कभी सुबह सुबह मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर होता हूँ जहाँ पे मुझे आई हैव टू लीव इन 2 मिनट्स और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इवन कि मेरे पास फेस वॉश करने का भी टाइम नहीं होता, वहाँ पे मेरे लिए जो है वो बहुत ही हैंडी होते हैं बेबी वाइप्स। These are the Johnson's ones, baby wipes। बहुत काम आते हैं आपके मेकअप रिमूवल के लिए भी, आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए भी, आपका फेस वॉश करने के लिए भी। एनीथिंग यू कैन यूज़ इट फॉर द बेबी वाइप्स। लाइक ये मैंने $1 शॉप से जो थे 150 के मैंने लिए थे। दीज आर रियली वेरी हैंडी। जब कभी मुझे निकलना हो और मेरे पास इतना फेस वॉश करने का टाइम ना हो, आई जस्ट गेट वन आउट एंड क्लीन माई फेस एंड आई डू दिस रूटीन, आई एम गुड टू गो। सो वॉट इज़ दिस रूटीन? इट्स अ वेरी सिंपल रूटीन। सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, ना कोई आपको प्राइमर चाहिए, ना कोई आपको फाउंडेशन चाहिए, ना ही आपको कोई ढेर सारी चीज़ें चाहिए कि आप you have to look good with all those things. So in this makeup you just need 2 things. One is concealer and the other one is powder. So this is how I get ready in 2 minutes. So this is the concealer which I'm going to use, and usually I pick this one up because this is the one I have and I don't like it much, लेकिन अब मेरे पास पड़ा हुआ है, so I'm just using it. It's a very good concealer for many people, but it does not work for me because I have fine lines under my eyes. तो मेरे अंडर आई के ऊपर ये हमेशा क्रीज कर जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। बट स्टिल आई एम यूजिंग इट बिकॉज मैं बहुत ही कम अमाउंट में जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है। सो दैट्स हाउ आई एम यूजिंग इट। तो ये काफ़ी अच्छा जो है मुझे रिजल्ट फिलहाल दे रहा है। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट शेयरिंग दिस रूटीन विद यू गाइज। सो आई एम टेकिंग फिट मी कंसीलर। दिस इज द फिट मी कंसीलर इन द नंबर 25. So this is the number which is my shade, and what I do usually, I just pick the concealer and I just apply it under my eyes just like that. एंड ये लिटरली मैं सुबह या जब कभी मुझे बाहर जा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर मैं कर रहा होता हूँ, इस तरह से रेडी हो रहा होता हूँ। एंड व्हाट्स रिमेनिंग ऑन टू द वॉन्ड, आई एम जस्ट टेकिंग इट एंड अप्लाइंग इट जस्ट लाइक दिस, नथिंग एल्स। अगर आपकी कोई भी पिगमेंटेशन है, कोई ब्लेमिशेस हैं, आप उसको इस तरह से कवर अप कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, यू आर गोइंग टू ऑफिस और to any occasion where you wanna look minimal and you wanna look fresh, you can do this. So what I do, I don't take any blender because इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको वेट करूँ, फिर ड्राई करूँ और फिर उसको यूज़ करूँ। So I take my finger, which is the best thing I have, and I just blend it like this. Like that is it. I just applied concealer to cover up my dark circles and to give me some highlights onto the highest points of my face, and that is it. Alhamdulillah my skin is like fine, तो मुझे कोई pigmentation या कुछ नहीं है, सिर्फ dark circles हैं, so that's why I just cover it up. And the second thing which I use in this tutorial is going to be a compact powder. Compact powder और loose powder जो है वो 2 different तरह के powders होते हैं. Loose powder, as you guys know, okay, it's a powder thing and you set your foundation and you bake with it. लेकिन जो compact powder होते हैं they have pigmentation in it. यही इसीलिए बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया that use it
to touch up, and you can also make the base with it. So what I'm just going to do, I'm just taking this Daraz one, the Twin Cake Lite Beige number 1, and I'm just going to take this puff which I have right now, and I'm just going to pick up the product like this, and I'm just going to set my concealer with it. Just like that, and then I'm just going to apply it to my whole face just to give me a foundation. I haven't applied any moisturizer, any primer, nothing of this sort, and just finishing up with this. मेरी eyelids जो हैं वो भी बहुत tiny है, so that's why I'm just using it onto my eyelids as well. So it is a Twin Cake. आप कोई भी compact जो आप use करते हैं वो ले सकते हैं, because it has coverage, it has pigment into it, so you can make your base with it. Alright, so this is it. If you have time, you can spray your face with this fixing spray. I don't, because I have a combination skin, and oils जो हैं वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद जब face पे आते हैं तो ये सब कुछ जो है वो settle down हो जाता है. So that is it. I'm not going to contour my face. I'm not going to do anything like that. ये है 2 मिनट में जिस तरह से आप जो है वो तैयार हो सकते हैं. And you know, this is looking fresh. This is looking minimal because we haven't applied anything जो कि केकअप हो या जो कि आपकी स्किन को जो है वो टाइम ले आपको तैयार होने के लिए. दिस इज़ द मिनिमल थिंग कि आप अपने कंसीलर से अपने इम्परफेक्शन जो है उनको छुपाएं, एंड देन मेक अ बेस विद एनी of the compact powder that you have. I happen to have this Twin Cake and Daraz Select का ये जो Twin Cake है, ये वैसे भी आजकल मेरा काफ़ी फेवरेट है. इसकी बेस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको बताया कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी गुड प्रोडक्ट. सो आई जस्ट do this and I am good to go. You can see I have very minimum thing onto my face. It's looking fresh, it is looking presentable. So this is how I get ready in just 2 minutes. कोई भी लंबे चौड़े इसमें जो है वो स्टेप नहीं है कि पहले आपने प्राइमर लगाया है, देन आप उसको वेट कर रहे हो, देन आप फाउंडेशन लगा रहे हो, उसको ब्लेंड कर रहे हो, देन आप उसके ऊपर कंसीलर लगा रहे हो, देन आप सेट कर रहे हो, देन यू आर डूइंग ब्रॉन्जिंग, कॉन्टोरिंग एंड नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ. अगर आपके पास टाइम है, आफ्टर दैट यू कैन हैव योर ब्रॉन्जर और कॉन्टोर ऑन, बट आई डोंट. दिस इज द ओनली 2 minutes face that I can do, and I usually do this like to go out, to have my meetings, to meet my friends, to hang out with them, or just to do any sort of thing where I feel like I need something onto my face and it should be minimal. So this is the look that I go for. So that is it for the video, guys. Hope you enjoyed it. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. And once again, thank you so much, guys, for 6K subscribers. Like, I never thought that I would be growing this fast. Now the growth rate is like growing up very fast, so I'm really thankful to you guys for always giving me your love and support, and I will see you guys in the next one. tab tak ke apna khayal rakhiyega. And finally, I just want to say wish you a very happy new year, guys, and wish कि आपकी तमाम resolutions जो हैं वो इस साल में you can complete them. So thank you so much once again for watching, and finally, Allah Hafiz.